Hello students and welcome to the online study classes. Today we will do the question answers of this chapter, A Triumph of Surgery, class 10th, and the book name is Footprint Without Feet. Okay, at first we will do the question answers and after that we will do the word meaning of this chapter. Okay. Start writing. Take out your copies. A triumph of surgery. Okay, a triumph of surgery. Chapter 1. Okay, page number 1. Read and find out. Question number 1. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Why was Mrs. Pumphrey worried about Tricky? जो मिसेस पम्फ्रे थी वो ट्रिकी के बारे में मतलब ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी? ओके, आंसर मिसेस Pumphrey is worried about Tricky because he is not well. He has refused to eat food and had bouts of vomiting. Full stop. She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he is not well. He has refused to eat food and had bouts of vomiting. She feels
that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. मिसेस पंफ्रे इसीलिए चिंतित थी ट्रिकी के बारे में क्योंकि वो ठीक नहीं था और उसने खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, मतलब खाना खाने से इनकार कर दिया था और उसे बार बार उल्टियाँ हो रही थी। इसीलिए उसे लगा कि मिसेस पंफ्रे को लगा कि उसका डॉग बहुत ही ज़्यादा कुछ बीमार है, जैसे कि उसे लगा कि वो क्या है, उसमें पोषण की कमी हो गई है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, या फिर उसको कुपोषण हो गया है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What does she do to help him? Is she wise in this? What does she do to help him? Is she wise in this? उसने उसकी मदद के लिए क्या किया? ठीक है, जो उसने किया क्या वो बुद्धिमानी का काम था? आंसर, मिसेस पंफ्रे starts giving him extra snacks like malt, cod liver oil and Horlicks. Apart from his main meals, to improve his condition, she does not give him any exercise considering his listlessness as well. She considering his listlessness as well. She is not wise. She is not wise in doing
So because overfeeding tricky is worsening his condition his conditions instead of improving it. It has made him very fat and lazy. Okay. Mrs. Pumphrey starts Pumphrey. Pumphrey starts giving him extra snacks like malt, cod liver oil, and Horlicks apart from his main meals to improve his condition. She does not give him any exercise, considering his listlessness as well. She is not wise in doing so because overfeeding Tricky is worsening his conditions instead of improving it. It has made him very fat and lazy. जो मिसेस पम्फ्रे थी उन्होंने उसे ट्रिकी को अपने डॉग को एक्स्ट्रा स्नैक्स मतलब एक्स्ट्रा कुछ खाने के लिए देना शुरू कर दिया था. ठीक है, वो जौ देती थी उन्हें, कॉड नामक मछली के लीवर का ऑयल देती थी, हॉर्लिक्स देती थी. ठीक है, मतलब ये उसके मेन मील से जो उसका मुख्य भोजन था उससे अलग था, ये उसकी हालत को सुधारने के लिए. ठीक है, वो उसे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं देती थी. उसे लगता था कि जो उसका डॉग है ट्रिकी वो बहुत उसमें कुछ जान नहीं है, बेजान सा हो गया है, इसीलिए वो उसे एक्सरसाइज भी नहीं कराती थी. और वो ये सब करने में बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं थी, क्योंकि ओवर फीडिंग मतलब ज़्यादा भूख से ज़्यादा भोजन खिलाना ट्रिकी की हालत को ज़्यादा बिगाड़ रहा था बजाय उसके सुधार के. ठीक है, इसके कारण जो ट्रिकी था बहुत ज़्यादा फैट, बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Who does I refer to in this story? ठीक है, इस कहानी में I कौन है? As you all know, I is the narrator, who is a veterinary doctor, Mr. James Harriet. Okay, start answer. I refers to the narrator, Mr. James Harriet, a veterinary doctor.
ओके, आई कौन था? नैरेटर था, जो कि एक जानवरों का चिकित्सक था और उसका नाम था जेम्स हैरियट। ओके, नाउ पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1. Okay, is the narrator as rich as Tricky's mistress? जो नैरेटर था वो ट्रिकी की मालकिन के तरह ही अमीर था। ठीक है, क्वेश्चन है क्या वो नैरेटर जो मिस्टर जेम्स हैरियट थे वो मिसेस पम्फ्री के जितना ही अमीर थे? ओके, स्टार्ट राइटिंग आंसर. नो, द narrator is not as rich as Tricky's mistress. We can say so because the narrator seems fascinated by how lavishly Mrs. Pumphrey spends on the maintenance of her pet. ठीक है, नो द नैरेटर इज नॉट as rich as Tricky's mistress. We can say so because the narrator seems fascinated by how lavishly Mrs. Pumphrey spends on the maintenance of her pet. ठीक है, जो नरेटर था वो ट्रिकी के मिस्ट्रेस के जितना अमीर नहीं था। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो नरेटर था वो जो मिसेस पम्फ्री की खुले दिल से जो अपने डॉग के लिए, वो अपने पेट के लिए उसका मेंटेनेंस मतलब उसकी देखभाल करती थी, मतलब उसके लिए चीज़ें खरीदती थी, उस पर खर्च करती थी, तो खुले दिल से, मतलब लेविशली मीन्स खुले दिल से, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित या आकर्षित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. How does he treat the dog? ठीक है, how does he treat the dog? जो नैरेटर थे, जो कि एक डॉक्टर थे, उन्होंने उस डॉग को कैसे ट्रीट किया, मीन्स कैसे उसको उसका इलाज किया। ओके, आंसर
Answer. The doctor gave Tricky no food but plenty of water for 2 days. Slowly, the dog started showing interest in his surroundings and began mixing with the other dogs at the surgery. On the third day, the doctor saw Tricky licking the empty supper bowls of the other dogs. Next day, a separate bowl was kept for him, and the doctor was pleased to note that Tricky had run to eat its food from that day onwards. Its progress
was rapid. It did not require medicinal treatment of any kind and recovered quite well at the end. The dog gave Tricky no food but plenty of water for 2 days. Slowly, the dog started showing interest in his surroundings and began mixing with the other dogs at the surgery. On the third day, the doctor saw Tricky licking the empty supper bowls of the other dogs. Next day, a separate bowl was kept for him, and the doctor was pleased to note that Tricky had run to eat its food from that From that day onwards, its progress was rapid. It did not require medicinal treatment of any kind and recovered quite well at the end. ठीक है, क्या हुआ? डॉक्टर ने स्टार्टिंग में उसे सिर्फ और सिर्फ पानी दिया, बहुत सारा पानी, 2 दिन तक के लिए पानी दिया, कोई भी खाना उसे नहीं दिया। धीरे धीरे जो ट्रिकी था उसने अपनी रुचि अपने चारों ओर सराउंडिंग में उसने अपनी रुचि दिखाना मतलब शुरू किया, और जल्द ही वो मतलब जो वहाँ के अन्य डॉग्स थे उनके साथ घुल मिल गया। ठीक है, उस हॉस्पिटल में जो अन्य डॉग थे उनके साथ घुल मिल गया। ठीक है, तीसरे दिन डॉक्टर ने देखा कि जो ट्रिकी है वो उनके जो खाली डिनर वाले बोल्स थे, मतलब जिसमें डिनर दिया गया था, उसके बोल्स को वो उसके कटोरों को वो चाट रहा था, मतलब अन्य कुत्तों के कटोरों को वो चाट रहा था। फिर अगले दिन डॉक्टर ने उसके लिए एक अलग सा बोल दिया, और जो डॉक्टर था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये नोट कर, मतलब ये देख के कि जो ट्रिकी है वो अपने खाने के लिए दौड़ रहा है, मतलब खाना खाने के लिए वो दौड़ के आया। और उसी दिन से जो उसका सुधार था वो तेज़ी से हुआ। ठीक है, और उसको कोई भी दवाई देने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें सुधार हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? ठीक है, वो ट्रिकी को एज अ मतलब हमेशा के लिए मेहमान के तौर पे उसको अपने अस्पताल में रखने के लिए क्यों इतना ज़्यादा आकर्षित हो रहा था? आंसर, he is tempted to keep Tricky
on as a permanent guest because thanks to Tricky, he is enjoying a wonderful life with fresh eggs for breakfast, wine and brandy for lunch and dinner, which were supplied by Mrs. Pumphrey for Tricky. He is tempted to keep Tricky on as a permanent guest because thanks to Tricky, he is enjoying a wonderful life with fresh eggs for breakfast, wine and brandy for lunch and dinner, which was supplied by Mrs. Pumphrey for Tricky. ठीक है, वो इसीलिए उसे लालच आ गया था ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रखने के लिए, क्योंकि ये सब ट्रिकी के कारण था कि जो वो एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे बहुत ही वंडरफुल लाइफ का, बहुत ही आरामदायक लाइफ, उनकी जो ज़िंदगी चल रही थी, उनको नाश्ते में एग्स मिल रहे थे ताज़े ताज़े, वाइन और ब्रांडी मिल रही थी लंच और डिनर के लिए, ठीक है, जो कि मिसेस पम्फ्रे द्वारा ट्रिकी के लिए भेजा जा रहा था। ठीक है, वो लोग ट्रिकी को नहीं दे रहे थे और बल्कि खुद ही उसका सेवन कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? Why does Mrs. Pumphrey think that the dog's recovery is a ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? ठीक है, मिसेस पम्फ्री को ऐसा क्यों लगा कि जो उसकी डॉग की रिकवरी हुई, उसकी डॉग का जो सुधार हुआ है उसकी हेल्थ में, वो एक जीत है उस अस्पताल की। ओके, स्टार्ट राइटिंग आंसर। मिसेस Pumphrey is shocked
when she sees Tricky, she thinks that the dog's recovery is a triumph of surgery because earlier the dog had the appearance of a bloated sausage with a leg at each corner. It was hugely fat, dull, and inactive. But after the treatment, he is full of life, active, and runs and leaps into the car on Mrs. Pumphrey's lap. She is therefore extremely grateful to the doctor. Mrs. Pumphrey is shocked when she sees Tricky. She thinks that the dog's recovery is a triumph of surgery because earlier the dog had the appearance of a bloated sausage with leg at each corner. It was hugely fat, dull, and inactive. But after the treatment, he is full of life, active, and run and leaps into the car on the Mrs. Pumphrey's lap. She is therefore extremely grateful to the doctor. जब उसने अपने डॉग की रिकवरी देखी, सुधार देखा, तो उसे लगा कि ये जीत है, अस्पताल की जीत है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि पहले जो डॉग था ट्रिकी, वो दिखने में एक ब्लॉटेड फूले हुए सॉसेज की तरह लग रहा था, जिसके चारों कोने से पैर निकल आए थे और वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था,
डल हो गया था और बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके ट्रीटमेंट के बाद, उसके इलाज के बाद उसमें बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा उसमें जान आ गई, बहुत सक्रिय हो गया, दौड़ने लगा, कूदने लगा अपनी। जब वो मिसेस पम्फ्री उसको लेने आई तो उसने बहुत लंबी छलांग मार के अपने मिसेस पम्फ्री मिस्ट्रेस के लैब में, उसके गोद में चला गया। और इस तरीके से जो मिसेस पम्फ्रे थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा डॉक्टर की आभारी थी या एहसानमंद थी। ओके, दैट इज़ वाई दिस सर्जरी इज़ अ ट्रायम्फ। ओके, that's all for today, students. Thank you and have a good day.